So today we are going to discuss about electrostatic potential, right? Now what is electrostatic potential? The word potential you need to understand, right? Suppose there is a source charge and it has some electric field E, and the source charge is emitting electric field lines in all the directions. Now there is a second charge, say test charge, and we have taken 2 points A and B. We are trying to bring this test charge in the electric field of source charge that we have already studied in the first chapter. किसी भी charge को, say this is a source charge, this is a source charge, and we are bringing a second charge in the electric field of the first charge. So the moment it will come in the field, it will experience a force QE. Now depending on what is the nature of the force, attractive है तो force इधर लगेगा, repulsive है तो force बाहर की तरफ लगेगा. So this charge is going to experience a force which is given by QE. Now suppose we are trying to push, हमने थोड़ा इस पे force लगाया and we are trying to move it this side. Then we are spending some of our joules on this body. अगर हम इस बॉडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो इस डायरेक्शन में है के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, इट मींस वी आर स्पेंडिंग सम जूल्स ऑन दिस बॉडी, राइट? से सपोज ये, आई रिपीट अगेन फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइंड लेट, दिस इज अ सोर्स चार्ज, दिस इज अ चार्ज विच इज ट्राइंग टू कम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज. सो हमने इस पे 100 जूल स्पेंड किए और इसको यहां ले आए, right? Let us name this point as A. Because we have spent 100 joules on this body, on this charge, so that it has come to point A. So we will name कि A point तक लाने में हमने इस पे 100 joules spend किए, तो A point का potential कितना है? The potential of point A is 100. Now suppose if अभी electrostatic force of repulsion will be more here or more here, obviously it will be more here, less distance, more force. So अभी हमें A से इसको B तक ले जाना है, सेकेंड पॉइंट B. So we have to obviously spend more joules, क्योंकि जैसे जैसे हम क्लोज जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन स्ट्रांग हो रहा है. So जितना वर्क डन हम इस बॉडी पे करते जा रहे हैं, वेयर इज दैट वर्क डन? दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द number of joules as the work done of that particular location. So this is called as electric potential. किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए जितने जूल्स हम स्पेंड करते हैं, जितना हम वर्क डन इस बॉडी पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. रिमेंबर चिल्ड्रन, सी एनर्जी किसमें, एनर्जी, हु इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? चार्ज के पास है एनर्जी. लोकेशन टेल्स अस कि हमने कहा कि अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल 100 है तो हमें 100 जूल स्पेंड करके इसको ए पॉइंट तक लाना है. बी पॉइंट का पोटेंशियल 200 है, तो वी हैव टू स्पेंड 100 जूल्स मोर ऑन दिस बॉडी सो दैट इट मूव्स टिल हियर. सो रिमेंबर, potential is the characteristic of the point of the location, not the charge. Charge will have its own energy. Electrostatic potential is the characteristic of the location. Suppose this is a location and we are spending 10 joules till here, और इसको पास ले जाने में we are spending 25 joules. So पहले वाले पॉइंट का पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, समझो ये 1 जूल है, 1 जूल को मैं पॉइंट ए तक लाई, 10 जूल स्पेंड किए. 1 जूल को मैं पॉइंट बी तक ले गई, 25 जूल स्पेंड किए. तो ए पॉइंट का पोटेंशियल विल बी 10 एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल विल बी 25. सो व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज, because we are doing this work, we are spending these joules against the electrostatic force. So hence we name this as work done per unit charge. Say consider we are moving a charge from A to B, right? When we are moving a charge from A to B, the electrostatic force of repulsion QE will be this side. Suppose this is positive, this is positive. Source charge is also positive. तो जब हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा. बट वट एवर वर्क वी आर डूइंग, वी आर स्पेंडिंग एंड वी आर मूविंग द चार्ज इन दिस डायरेक्शन. सो वी आर स्पेंडिंग आवर एनर्जी. से this energy is called as electric potential energy. So whenever say we are moving a से पॉइंट ए पे एनर्जी हमने स्पेंड की थी यू ए, पॉइंट बी पे हमने एनर्जी स्पेंड की यू बी. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी? द डिफरेंस
in doing the work in moving a charge, यूनिट चार्ज भी हम बाद में बोलेंगे, कोई भी चार्ज है उस चार्ज को हम जब A से B तक लेके जा रहे हैं, सो द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ B, obviously we have to spend more energy, more joules, minus energy of A, that is UB minus UA, right? Now this change in potential energy is equals to work done. You have studied in mechanics also, work energy theorem, change in the energy is equal to the work done. So this energy can be written as the work done, energy and work, right, is equal to UB minus UA, energy of B final point minus energy of initial point, right? Now work done in unit charge from A to B. अभी हमें पता चल गया ये जो वर्क डन है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. सपोज वी वांट टू फाइंड वर्क डन इन यूनिट चार्ज, सो वी डिवाइड दिस नंबर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. यूनिट चार्ज इट मीन्स इसको 1 रख देंगे बाद में फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन. So this is work done in moving a charge from A to B will be the difference in potential energy per unit charge, right? Now this work done per unit charge in 10th standard also you study the direct formula, potential is work done upon charge. ये जो work done per unit charge है, this work done per unit charge is called as the potential of that point. I'll repeat again and again, potential is the characteristic of the location of the point, of the position. So this can be written as potential difference between A and B. Potential for a given point, दो points के बीच में वही potential हमने ले लिया, we name it as potential difference, right? So we can write work done per unit charge as potential difference between A and B, but just now we have found it is UB minus UA upon charge. So this could be written as VB minus VA, final potential minus initial potential is work done from A to B, because work done in moving a charge from A to B was final energy minus initial energy. So where are we taking the charge? A से B में हम चार्ज ले जा रहे हैं. So WAB means work done from A to B per unit charge, right? Suppose we are doing opposite, we are taking charge from A to B, तो यहाँ पे negative sign लगा देंगे, that's it. So work done from A to B will be negative of work done from A to B divided by charge. This is potential between A and B. This is VB minus, this is the main formula. You remember this formula always. Whenever we are taking a charge from a position A to a position B, then VB minus VA, final potential minus initial potential, is work done from A to B per unit charge, right? I'll repeat again, work done per unit charge means ये एक point है, ये एक point है, ये एक point है, ये एक point है. यहाँ तक लाने के लिए मैंने 10 joules spend किए. Potential of this point का potential है, energy will be with the charge. इस पॉइंट का पोटेंशियल 10, मतलब यहां तक लाने के लिए मुझे 10 जूल स्पेंड करने पड़ेंगे. इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 मींस आई हैव टू स्पेंड 100 जूल्स ऑन द चार्ज in order to bring it here. Potential of this point is 1000. I have to spend 1000 joules on 1 unit of charge in order to bring it to that position. It is like a milestone. Say you are moving, the milestone says 100 kilometer. So that milestone is the characteristic of the position. आप यहाँ तक आए हो तो 100 किलोमीटर हुआ है, right? You have moved up to that point. उस point का जो milestone है, that tells us 100 kilometer we have traveled. Who is traveling? We are traveling. So who is traveling here? Who is moving? Who is having the energy charge? उस location का जो energy spend, कितना energy spend करने पे हम उस location पे पहुंचेंगे, that energy spend is the potential of that point. Potential is the characteristic of the location of the point, not the charge. Charge will be carrying the energy. So we can write potential as work done from A to B per unit charge. Suppose इस Q को हम यहाँ पे ले जाएं. Suppose we are taking this Q on left hand side. So this becomes, suppose यहाँ पे ले गए, Q we have taken on left hand side. So Q into VA minus VB. I have taken this expression. VA minus VB is equals to negative of work done from A to B. Work done from A to B क्या है? UB minus UA. इसका negative कर दो, ये क्या हो जाएगा? UA minus UB. So Q into VA minus VB will be UA minus UB. Right? Now ये जो potential of A minus potential of B is the potential difference. किसी भी point का energy spent in coming
to that point is the potential. एक पॉइंट का पोटेंशियल और दूसरे यहां तक लाने के लिए 10 जूल, यहां तक ले जाने के लिए 20 जूल. सो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. द वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज. क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स है जो 1 कूलम एक्सपीरियंस करेगा. सिमिलरली व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज अ वर्क डन एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम, राइट. So we can write this as the potential difference and let us name this as V. V भी कुछ नहीं, हमने V लिख दिया. So Q into V is energy minus energy, that is work done. So we can write new formula of work done. What is that new formula? Charge into potential of potential difference. So potential work done is charge into potential difference. जहां से आपका ये वाला formula आता है, what you studied directly. So potential will be work done upon charge, right? Because potential is work done upon charge. I hope it is visible. Yes. So work done का unit क्या होता है? जूल. Upon charge का unit कूलम. So this is 1 joule per coulomb and this we name as volt. 1 volt is 1 joule upon 1 coulomb. How you define 1 volt? The potential of a point is said to be 1 volt when 1 joule is spent in moving a charge of 1 coulomb from one point to another. So that is how we define electric potential or electrostatic potential.